Assalamu alaikum. My name is Dr. Shamsa Nazish from Pearls of Pediatrics. We were discussing history of presenting complaint, and yesterday I'm just going to give you a short review of what we have discussed. Many people are commenting and asking to make the videos in both English and Urdu. I have basically few international students and also national students, so I will try my level best to cover both of them. As last time I have discussed about the history taking in pediatrics, so we have discussed about the history of presenting complaint, and I'm just going to give you a short review. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है कि जो पेशेंट सिम्टम्स एक्सप्लेन करता है, जो वो डॉक्टर को बताता है, दीज आर एक्चुअली द सिम्टम्स told by the patient, and I have told you that there are various systems in the body. Starting from head to toe, we have discussed about CNS, we have discussed about eye, ENT, cardiovascular system, GIT system, locomotor system, and as well as other systems. So we have discussed some of the presenting complaint. Here I have told you, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था कि CNS की कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी न्यूरोलॉजी के सेक्शन में. सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. स्ट्रोक की मैंने आपको कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताई थी. इंशाल्लाह आज हम इन सब की CNS की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको हर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना सिखाऊंगी. ठीक है. सो I think we have discussed with ataxia. So starting with Duchenne muscular dystrophy. So the patient with Duchenne muscular dystrophy या muscular disorder. What is the muscular disorder? Muscular disorder is actually पट्टों के मसले. ठीक है. तो उसमें आपके पास पेशेंट किन किन कंप्लेंट्स के साथ आता है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है जो वो शिकायत करता है. ठीक है. दैट इज़ बेसिकली नॉन एज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन हम डिटेल में ले सीखेंगे, लेकिन क्या क्या कंप्लेन होती हैं जिनको पट्टू का मसला होता है. ठीक है. एक तो ये होता है कि दे हैव द हिस्ट्री ऑफ फॉल, गिर जाते हैं क्योंकि पट्टे उनको सपोर्ट नहीं करते. ठीक है. दे हैव प्रोग्रेसिव वीकनेस, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है. दैट इज़ प्रोग्रेसिव, नॉट द स्टैटिक. आप देखेंगे कि बहुत सारे CNS के ऐसे लीजन हैं, जैसे हम अभी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आगे पढ़ेंगे, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं. लाइक CP चाइल्ड जो है, डैट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव स्टैटिक डिसऑर्डर. लेकिन जो डुशेन मस्कुलर डिसऑर्डर हैं, या और भी बहुत सारे मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इस तरह की चीज़ें आती हैं, दे ऑल हैव बेसिकली प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव वीकनेस. पेशेंट आर अनएबल टू बियर द वेट, अपना वज़न नहीं उठा सकते, एंड ड्यू टू दिस दे हैव द हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल्स, ज़्यादा गिरने की हिस्ट्रीज़ होती हैं. दे हैव वॉकिंग डिफ़िकल्टी, उनको चलने में मसला होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला होता है. और बाज़ औक़ात दे कैम फॉर द डायग्नोस्टिक वर्क, मतलब वर्कअप कराने के लिए आते हैं. ठीक है. वो अपना बताते हैं कि भाई हमारे ये मसले हो रहे हैं. बच्चा पहले ठीक तरीके से बैठता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वीकनेस होना शुरू हो गया, अब बैठ भी नहीं पाता. और अब ये है कि पहले बैठ के खड़ा हो जाता था, तो अब बैठ के खड़ा भी नहीं हो पाता. मेडिकल के टर्म में दिस इज़ नोन एज कवर्ड साइन. सो इसके लिए आते हैं. ठीक है. मुसलसल कमज़ोरी, चलने में मसला, सांस लेने में मसला, ये बीमारी की वजह से टेस्ट कराने के लिए पेशेंट्स आते हैं. न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़, डिजनरेटिव ब्रेन डिज़ीज़ का मतलब ये है कि जिसमें दिमाग का जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोग्रेसिवली दे गॉट प्रोग्रेसिवली डेटोरेटेड. मतलब उसकी पहले वो जितनी मिकदार में थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं. अगर दिमाग पहले बिल्कुल था, वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है. ठीक है. वो उस तरह से प्रॉपर नहीं पड़ता. उसमें पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है? दे प्रेजेंट विद फिट्स, दीज आर नॉन एज झटके. दे कैन प्रेजेंट विद कॉफ ड्यू टू न्यूरोनल डैमेज. दे हैव रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, सो दे कैन प्रेजेंट विद कॉफ. दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स, जिस्म की एबनॉर्मल हरकत होती हैं. इसके अलावा फ्रीक्वेंट गिरते हैं. फिज़िकल मेंटल डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि इसका ब्रेन डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ का जो लिंक होता है, इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद इट इज़ एसोसिएटेड विद
brain injury. So there is physical disability as well as the mental disability. And there are neural tube defects of the hydrocephalus, जिसमें बच्चे का सर बढ़ना शुरू हो जाता है. द मदर स्पेशली हु डोंट टेक द फॉलिक एसिड ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड नहीं लेती, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. वैसे तो आइडली हर जो है वो फीमेल को चाइल्ड बेरिंग एज में लेना चाहिए फॉलिक एसिड, बट इफ़ दे आर नॉट टेकिंग द फॉलिक एसिड देन देयर बेबी मे सफ़र फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड देयर इज़ डिफेक्ट. एंड व्हाट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? कि उनकी ब्रेन जो है उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्होंने दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को, जिन्होंने वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ब्रेन है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवर किया होता है. सो दे गॉट damaged. Either these are exposed, so there is either the neural tissue is exposed, or there is history of recurrent infections, or there is history of hydrocephalus में क्या होता है कि बच्चे का सर बड़ा हो जाता है. सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या हाइड्रोकेफलस में बच्चे किस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आते हैं कि सर बढ़ रहा है बच्चे का, एंड देयर कैन बी स्वेलिंग इन द बैक, कमर पे फोड़ा है. देयर कैन बी फीवर, बार बार उनको फीवर होगा, बुखार होगा. देयर कैन बी फिट्स, उनको झटके होंगे. ठीक है. और फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, मिसाल के तौर पर उनको पहले कोई न्यूरोलॉजिकल चल रहा था मसला तो वो कोई शंट वगैरह डलवाने के लिए आते हैं. तो दीज आर द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. So here I have covered the neurology section, and I have just told you that what are the presenting complaint. And in section 1 where CNS, I have started from head to toe, so started from CNS. So I have discussed that what are the presenting complaint in various diseases of the CNS. So you know there is a neuron, and there is the axon, and there is the axon terminal, and there is the synaptic terminal. Here I am going to draw that so that it might be easy for you to understand. Here is the neuron, its nucleus, and here is the axon, in which there is either myelinated, unmyelinated, or there is axonal terminal, in which various material are released, and that is the neuromuscular junction where these material got attached, and there is excitation of the muscle, and that lead to activity. So if there is problem in neuron, in axon, in synaptic or transmission pathway, in the muscular problem, that can lead to various diseases in children. We are discussing, I am actually from fields of pediatrics, and my academy is also from field of pediatrics. So I have discussed this. I am also trying to convert it in PDF form so that you may get a benefit out of it. And for this whole preparation, I've got help from Nelson Pediatrics and Imperial Pediatric Long Case book, and I have also learned a lot of things from my senior, and I have also seen the various videos and got the help from them. So I hopefully you will like it. And the end I would like to share the link. ऐसे बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स हैं दैट आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स ड्यूरिंग देयर स्टडी टेन्योर्स beside their studies. So they can apply under the links that is basically the Punjab government program. And if you have the domicile, and beside this you have the your PMDC certificate, and beside this you have the training certificate in any fields. Like I am in field of pediatrics, so training certificate of my field, house job certificate, training certificate, as well as so you can apply it
बाकी तो सब कुछ किस्मत में होता है, बट यू कैन गेट एट द जॉब एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क, यू कैन कंटिन्यू विद योर एम्बिशन, और आप ख़ुद जो है वो अपना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. Thank you so much. Hopefully you will like it, and kindly comment and share your experience. What should I do more? मुझे मज़ीद क्या करना चाहिए to make it more useful for both at the international level and the national level. Thank you so much. Remember in prayers.